Welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में लाएंगे आप तक देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार। कार्यक्रम में चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, स्टूडियो में आपका स्वागत। जी शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Vishal. Exports in June to be around $65 billion. Wholesale price inflation eases to 15.18% in June. Sensex closes near 53,400 points. Nifty ends below 15,950 level. Rupee weakens to 79 rupees and 88 paisa against the US dollar. And Brent crude price plunged to trade around $97 per barrel. जून माह में देश का कुल निर्यात $65 अरब रहने का अनुमान। थोक मुद्रास्फीति इस वर्ष जून में घटकर 15.18% पर आई। सेंसेक्स 53,400 के करीब हुआ बंद। निफ्टी फिसलकर 15,950 के स्तर से नीचे आया। रुपया कमजोर होकर डॉलर के मुकाबले $79.88 प्रति डॉलर के स्तर पर हुआ बंद और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें टूटकर $97 प्रति बैरल के आसपास। सबसे पहले बात कार्यक्रम में करते हैं भारत के देश के निर्यात की। इस वर्ष जून में भारत का कुल निर्यात लगभग $65 अरब रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में ये 22% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश का कुल निर्यात $1.90 अरब रहने का अनुमान है। इस वर्ष जून में देश का कुल आयात $82 अरब से अधिक रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में ये 55% अधिक है। डॉक्टर शर्मा, एक्सपोर्ट के मोर्चे पर अगर देखा जाए तो एक अच्छी खबर है, जून महीने में 22% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है। लेकिन जो बढ़ता जो इम्पोर्ट है, इसमें ये भी एक बात है कि $82 अरब से अधिक रहने का अनुमान है इम्पोर्ट। ये एक चिंता की वजह बना हुआ है। व्यापार घाटा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आयात घटाने पर इस वक्त फोकस होना चाहिए या निर्यात और बढ़ाने पर? किस प्रकार से आयात और निर्यात के बीच संतुलन साधा जा सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है अच्छे लेवल पे ग्रो किया है। $65 अरब के आसपास का हमने एक्सपोर्ट किया, जिसमें लगभग कोई $40 अरब जो है मर्चेंडाइज है और 25 अरब के आसपास जो है सर्विसेज के एक्सपोर्ट हमने किए। लेकिन साथ में इंपोर्ट भी काफी बड़े स्तर पे ग्रो किया है, जो एक उधर से चिंता का विषय भी है कि ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर्ड विद द लास्ट ईयर, फाइनेंशियल ईयर। तो सीधे तौर पे जो इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है वो तो हमारा जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, खासकर जो हमारा कच्चा तेल है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, जिसका मेजर बर्डन बनता है, उसी की वजह से जो एस्केलेशन है इंपोर्ट में आती है मेजरली। और खास करके जो अभी कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके भी प्राइस बढ़े हुए हैं। तो मेजरली क्रूड ऑयल और प्लस द हाइक इन द कमोडिटी प्राइसेस इंटरनेशनली। लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे आरबीआई ने अभी रूपी ट्रांजैक्शन अलाउ कर दिए हैं और ऊपर से एक सिंक्रोनाइज्ड मूव है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, जिसकी वजह से जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उनमें नरमी आएगी। तो आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो संतुलित अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट उस लेवल पे ग्रो नहीं करेंगे जिस लेवल पे अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि ये एस्केलेशन इन इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से ही है, जो कमोडिटी प्राइसेस एक बड़े स्तर पे बढ़े हुए हैं। और उधर से हमारा जो एक्सपोर्ट है, जिस तरीके से अभी जो मैंने बताया कि आरबीआई ने जो ट्रांजैक्शन अलाउ किए हैं, तो एक्सपोर्ट में हमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है कि हम और एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे आने वाले महीनों में। खासकर जो ये क्राइसिस में जो इकोनॉमीज हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन में युद्ध है, तो रशिया से हम काफी इंपोर्ट भी करते हैं और हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो रहा है। टोटल ट्रेड हमारा इंक्रीज हुआ है पिछले 2-3 वर्षों में। तो उधर से श्रीलंका को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो ट्रेड की अवस्था है संतुलित है, लेकिन ये जरूर है कि इस महीने में जो हमारे पास डेटा है जून में थोड़ी तेजी रही है इंपोर्ट्स में, जो कि वजह वही है कि हमने
कच्चे तेल के प्राइसेस लगातार बढ़े हैं और वो बहुत वॉलेटाइल हैं और कई नए स्तर भी उन्होंने रिसेंट ईयर्स में एस्टेब्लिश किए हैं। पहले भले ही क्रूड $150 भी हो चुका, लेकिन अभी के जो पीछे के 10 वर्षों में वो काफी हाई लेवल पे बढ़ा है। तो आने वाले टाइम में यही आशा है कि ये संतुलित अवस्था में वापस आएंगे, एक्सपोर्ट हमारा और तेजी से बढ़ेगा और इंपोर्ट के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रहेगा। और जिस तरीके से सरकार का जोर है, सरकार ने पिछले महीने में बहुत सारे कदम उठाए हैं, कुछ एक्साइज ड्यूटीज भी कम की हैं और उधर से आरबीआई ने इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए various commodities. जी कि देश में ही निर्माण किया जाए, ज्यादा से ज्यादा चीजों का कम से कम हमें इंपोर्ट करनी पड़े बाहर से। जी बिल्कुल। The other good news which is coming out today is, this consultancy Deloitte India has predicted that the Indian economy will grow between 7.1 to 7.6% in this current fiscal year. And also, despite, like you were mentioning, the geopolitical realities, despite those realities, Indian economy will, continue to grow at between 7.1 and 7.6%, which also is in sync with what the RBI has predicted for this fiscal year. So, and this particular report has also said that India will reign as the fastest emerging economy. So what are the reasons? Because we are looking at the geopolitical realities, we're looking at the, the whole world is staring and fearing a recession. Coming on recession. So what are the reasons for this optimism? Yes, because internationally we are very good in the macroeconomic indicators. If you consider the prominent 5 indicators like the GDP growth and you consider inflation also. Our inflation is comparatively low as compared with many economies. Yes. Then the fiscal deficit and current account balance and the debt to GDP ratio. Considering these 5 indicators, we are the best performing economy in the top 10 economies. So that is strong support of fundamentals, economic fundamentals to attain this trajectory. Number 2, our growth is very, very consistent. Last year we grew at the rate of 8.7, 8.8% and near 9%. So this year projection, I believe this is very realistic, between 7 to 7.5%, and we are anticipating more than this. Yes. PhD Chambers connotation is that we will grow somewhere between 7.5 to 8%, because our indicators are showing strong strength. Our exports are growing, as we discussed, that export growth is more than 20% for many months. And then infrastructure is also growing at the rate of 19%. Last month, infrastructure grew at the rate of 19%. Then we have IIP numbers. 19%, 18% infrastructure and 19% IIP numbers. So all the indicators, prominent indicators, are growing in a good trajectory. So GDP is a combination of all these things, like the IIP growth, infrastructure, export growth. So all these parameters are supporting the GDP, and we anticipate that we will grow in a good number, and we will be the fastest moving economy. We will remain fastest moving economy, not only for this year, but for many years, in many coming years. So that is the strong strength of the fundamentals, as I discussed. In the prominent 5 indicators, we are very, very lucrative in the global charts. And on that note, there's still some more good news coming in from the consumer point of view. The wholesale price-based inflation, WPI, eased to 15.18% in June this year, according to the Commerce and Industry Ministry data released today. WPI inflation fell on lower prices of manufactured and fuel items. It was at a record high of 15.88% last month and 12.07% in June last year. WPI inflation in the reported month snapped the 3-month rising streak, but remained in double digit for the 15th consecutive month beginning April 2021. As per the data released on Tuesday, retail inflation based on Consumer Price Index, CPI, also eased to 7.01% in June this year from 7.04% in the preceding month. Dr. Sharma, like we said, slight ease in both the WPI and CPI figures, but it is again, good indication. Do you think that is a direct result of the intervention by RBI, the 2, rate hikes that the central bank, I beg your pardon, announced in the last 2 months? And the fact that these 2 indicators have eased, so does that mean that there's another prospect of another rate hikes or few more rate hikes in the coming months to rein in inflation? Firstly, interventions by RBI and government is visible now, because
they increased the interest rate, and there were so many measures also by the Ministry of Finance to curb inflation, to reduce the excise duties. So now the intervention is visible because inflation is now stabilizing, though in the high trajectory, but softening from CPI, as you said, from 7.8 to 7.04, then 7.01. So this is a significant improvement in the era of high commodity prices. So we appreciate the efforts of the government and RBI that they have contained the inflation, and now the inflation is stabilizing. And in the coming months, I believe inflation will improve further, and we will be observing the inflation in the normal trajectory in the next few quarters. CPI may come down to somewhere between 5 to 6% in the last quarter of this year. So that is the anticipation. Slowly it will be coming down. Then the WPI inflation, because international commodity prices were very, very high. Still they are high. Yes. So now this move by the central banks, by a synchronized move, yes, this will curb the price pressures, because now the speculators will not be able to hold their positions at the high level. They will not be able to use the easy money because the cost of money is now increasing. So that's why the international prices will not sustain in the speculative mode, or I would say in the higher trajectory. And number three, supply side measures by the government, like government is addressing so many, they are watching each and every commodity, as said by Government of India. They are trying to contain the price pressures in the commodities where there is high demand. So that is the third measure by the Government of India. So all these measures are going to benefit the economy, and these are becoming more and more prominent and visible to contain the inflation. And we are confident that inflation will be under control, and worst is behind. And I think inflation is peaked in India now. Well, on that note, let's hear it from रुक करते हैं शेयर बाजारों का। वैश्विक शेयर बाजारों में कमजोरी के बीच प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में आज मामूली गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 53,400 के करीब बंद हुआ, जबकि निफ्टी 15,950 के स्तर से नीचे आ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.18% के नुकसान से 98 अंक गिरकर 53,416 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.18% के नुकसान से 28 अंक फिसलकर 15,939 पर आ गया। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.4% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.56% के नुकसान में रहे। The Sensex and the Nifty today fell marginally. Both stock indices slipped amid negative global markets. The Sensex closed near 53,400 points, while the Nifty finished below the 15,950 level. The Sensex lost 98 points or 0.1% to finish at 53,416. The Nifty fell 28 points or 0.18% to end at 15,939. In the broader market at the BSE, the mid-cap declined 0.4%, while the small-cap index ended 0.56% down. In the Sensex SPAC, 12 companies posted gains while 18 logged losses. Sun Pharma was top gainer as it climbed 2.3%. Dr. Reddy's added 1.7%. Kotak Bank rose 1.5% and Maruti ended 1.4% up. On the other hand, Axis Bank tumbled 1.7%, HCL and SBI both declined 1.5% each. Tech Mahindra plunged 1.4%. In sectoral indices at BSE, 9 sectors gained while 10 witnessed losses. Oil and gas climbed 1% and energy sector gained 1.1%. Utilities and power, both indices rose 1% each. On the other side, IT lost the most as it ended 1.4% down. Tech index declined 1.1%. Healthcare sector fell 0.8% and basic material ended 0.7% down. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,299 companies gained while 2,023 fell. Shares of 140 companies remained unchanged. Dr. Sharma, fourth session in a row that we see that the markets are down in the red, ending in the red. What are the reasons? Do you think it's also a direct result of the inflation figures that have come out of the US market yesterday? Yes, you very rightly said that this is the impact of the inflationary figures of US because now markets are very uncertain. They are not finding any direction since the last many months because there are some negative cues from the global in markets. Firstly, the Russia-Ukraine war, then
inflation, which is very, very high in the advanced economies. Now the inflation is high, 41 years high in US. So now anticipation is that US Fed will increase the Fed rate once again with a significant number. That will impact the liquidity, and that will also increase the rate of return in the US economy. Dollar is strengthening and the bond yields are also increasing. So that will hit the market flow, capital flow towards the economies like India, because FIIs and other groups are investing heavily in the markets, and if the rate of return is comparatively high with the increased bond yield and strengthening of the dollar, then the capital outflow is there from the markets. So that's why markets are uncertain. They are not; these are not able to find any strong direction in either way, in upside or downside, because markets don't want to go down because fundamentals are strong. We have a long-term growth story, and our macroeconomic numbers are producing very good growth trajectory. That's why markets are not, markets don't want to go down. But markets are not going up because of such challenges that inflation is there, Russia-Ukraine war is there, and totally uncertain. Then crisis in Sri Lanka. So geopolitical developments are impacting the mood of the markets, and the aggressive policy by the Fed that they are going to increase the Fed rate by maybe by 75 basis point or 100 basis point. That will now depend people are on their predicting, thought process. in fact, given the new figures that have come out, 9.1% inflation. So markets are caught in the quagmire of geopolitical developments and strong fundamentals of the economy. These are not allowing markets to go down, but markets are not going up because of such challenges. So we can expect range-bound... range-bound trade is there. Markets are going down to the level of 15,700 or 800, but upside is 16,300, 400 or maximum 500 in the recent वीक्स। जी, मुद्रास्फीति के जो आंकड़े अभी आए अमेरिका में, और जैसे कि आपने बताया कि 41 साल के सबसे उच्चतर स्तर पर पहुंच गई महंगाई वहां पर, और उसके बाद ये भी उम्मीद की जा रही है कि फेडरल बैंक जो है, फेडरल रिजर्व वहां का, वो ब्याज दरें बढ़ाएगा, तो उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। हमारा जो आरबीआई केंद्रीय बैंक है उस पर भी दबाव होगा कहीं ना कहीं कि फिर महंगाई से निपटने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जाए। तो यहां से बहुत ही एक बुनियादी आपसे जानकारी ये जानना चाहेंगे कि महंगाई से निपटने के लिए क्या ब्याज दरें बढ़ाना ही एकमात्र रास्ता है या और भी कई रास्ते हैं? देखिए, ब्याज दरें बढ़ाना एक ही रास्ता तो नहीं है, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण रास्ता तो सप्लाई चेन को ईज आउट करना है। मतलब जितना सप्लाई चेन सुधरा हुआ होगा, जितनी भी सप्लाई चेन इंटैक्ट होंगी, उतना ही इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन पीछे हुआ क्या है कि पिछले दो साल में हम देखा कि कोरोना की स्थिति में लिक्विडिटी तो इंक्रीज हुई, बट प्रोडक्शन के ऊपर काफी इम्पैक्ट था। प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ जितनी के लिक्विडिटी इंक्रीज हुई। तो अभी जैसे ही डिमांड इमर्ज हुई वापस कोविड के बाद, जैसे ही लोगों ने अपनी खरीदारी शुरू की, तो प्राइस प्रेशर्स बनने शुरू हुए, और जो प्राइस प्रेशर्स हैं वो इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट से बनने शुरू हुए, जिससे कि रॉ मटेरियल महंगा शुरू हुआ पहले, फिर जो प्रोड्यूसर्स के कॉस्ट थे वो बढ़े, फिर उसके बाद जो रिटेल इन्फ्लेशन में वो जाके रिफ्लेक्ट हुए। तो अभी अब क्या है, इमीडिएटली आप सप्लाई चेन को नहीं सुधार सकते जी, उसके लिए आपको वक्त लगेगा सप्लाई चेन को, कि अभी डिमांड हमारे पास इतनी है, उस डिमांड की भरपाई के लिए हमें कितनी प्रोडक्शन चाहिए, उसके लिए आपको काफी प्रयास करने पड़ेंगे। आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, आपको एफिशिएंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी। लेकिन आप इमीडिएटली क्या कर सकते हैं? आपके पास एक ही संसाधन है कि आप ब्याज की दर बढ़ा के लोगों का सेंटिमेंट थोड़ा बदल सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है बढ़ गई है, अब मेरे को ईएमआई ज्यादा देनी पड़ेगी। मैं अगर कार खरीदता हूं तो उसकी पहले के मुकाबले में ईएमआई ज्यादा होगी, अगर मैं टू व्हीलर खरीदता हूं तब भी ज्यादा होगी, अगर मैं पर्सनल लोन लेता हूं वो भी मेरे को महंगा मिलेगा, और मेरे को जो उसका प्राइस कॉस्ट बेनिफिट है जिसके लिए मैं ले रहा हूं वो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगा जितना मैं पहले गेन कर सकता था। तो जिससे कि जो फिलॉसफी है, जो माइंड है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है और आप अपना खरीदारी खींचते हैं, कम करते हैं, जिससे कि प्राइस प्रेशर्स जो है वो सबसाइड होना शुरू करते हैं। क्योंकि जब डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, दे विल डिमांड लेसर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। अब जब प्रोड्यूसर के पास डिमांड नहीं है, दे विल डिमांड लेसर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द इंटरनेशनल
कम्युनिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी मार्केट्स के ऊपर उतना प्रेशर नहीं बनेगा। हमारा जो प्रोड्यूसर है वो रॉ मटेरियल तभी खरीदेगा ना अगर उसके पास प्रोडक्शन आगे बढ़ रही है और फटाफट मार्केट में बिक रही है। जब उसके पास इन्वेंट्रीज पाइल अप होनी शुरू हो गई तो वो क्यों आगे रॉ मटेरियल को आगे भरेगा। तो जब प्राइस प्रेशर्स कम होना शुरू करते हैं तो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस टूटना शुरू होंगे जी। तो जिसका कि ओवरऑल जो वर्ल्ड इन्फ्लेशन है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। बट देन द नेगेटिव साइड इज दैट द डाउन साइड इज देन दैट वी आर लुकिंग एट अगेन रिसेशन देन। No, because I can't say that pile up and there is no demand. No, we can't say that we will move towards the recession because this is the temporary phase of the equilibrium. Because we are facing this challenge because of the demand majorly. So recession will come if the demand is not happening. Right. So if we stabilize our monetary policy and we are not going to increase our interest rate in future, then the demand will again re-emerge. And there will be growth. And with the growth of as anticipated by the various organizations, and we earlier discussed that we will grow at the rate of 7.1 to 7.5%. So where is in recession? If we are growing more than at the level of 7.5 or even more than 4-5%, then inflation is not there. We'll continue with the discussion on Market Mantra, but after this short break. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आप सभी का फिर स्वागत। अब बात करते हैं घरेलू मुद्रा के प्रदर्शन की। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 24 पैसे कमजोर होकर 79 रुपए 88 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर की मजबूती के बीच रुपए में ये कमजोरी दर्ज हुई है। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.68% की बढ़त से 108.7 पर था। डॉक्टर शर्मा, रुपए में आज डॉलर के मुकाबले 24 पैसे की कमजोरी, रुपए पर ये दबाव केवल डॉलर की मजबूती की वजह से ही है या कोई और भी कारण, आप अन्य कारण भी देखते हैं इसके? देखिए, अभी तो जो दबाव आया है, जो आज देखा गया है, तो ये डॉलर की मजबूती की वजह से ही है और उसके लिए कारण है कि इन्फ्लेशन का बढ़ना। इन्फ्लेशन का बढ़ना सीधे तौर पे जाहिर सी बात है कि फेड अपना रेट बढ़ाएगा, डॉलर और मजबूत होगा। तो आने वाले टाइम में, क्योंकि मार्केट्स हमेशा एंटिसिपेट करती हैं फॉरवर्ड टाइम, तो जैसे ही फेड इंक्रीज करेगा, वो एंटिसिपेट कर लिया मार्केट ने कि फेड को 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाना चाहिए, तो डॉलर ने उसको भी फैक्टर इन कर लिया है कि डॉलर मजबूत हो गया। और उसी के मुकाबले में जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो हमारे कंट्रीज हैं, उनकी जो करेंसीज हैं वो अंडरमाइन होंगी जब हम उनको उसकी तुलना में देखेंगे। तो एक टेम्परेरी, आई थिंक ये जो आज का इंक्रीज हुआ है, ये कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज हमारी इकोनॉमी में नहीं हुई है, बल्कि हमारी तो पॉजिटिव हो रही है। हम एक्सपोर्ट में बहुत अच्छे से इंक्रीज किए आज ही, और कल हमारा डेटा आया, परसों आईआईपी नंबर में हम 19% पे ग्रो किए और हम इंफ्रास्ट्रक्चर में 18% पे ग्रो किए। तो नेगेटिव कहाँ पे है? हमारी इकोनॉमी में तो नहीं है। दिस इज ओनली because of the international factors. Yeah, and like you said, in fact, some analysts and even some of our experts on program here have said in the past also that, we should not be so worried about the rupee depreciating at a certain or, a certain level of rupee. What we should be worried about is at the rate, at the pace at which it is depreciating. So do you agree with that? That more important because, I mean, like you said, emerging markets, all emerging markets, it's not just Indian currency. All the currencies of various emerging markets, they are bearing the brunt of this situation right now. So it's not so much. I don't see, considering the worst position in the international markets, so many economies are facing the inflation and other geopolitical developments. So the rupee depreciation is, I think, natural because we can't say that there are a lot of developments in the negative developments in the international market and our rupee stays strong and stable. That will not happen. We have to face the heat of the developments which are happening at the global level. But we believe that rupee must stabilize at a certain level.
because the instability of rupee, volatility of rupee impacts more than depreciation. And what are the steps that you think the RBI, can take to limit or to stabilize the rupee even further? Yes, RBI has taken so many good steps. Like the recent rupee transaction is a great step to stabilize the pressure on the rupee, and we believe that in the coming days rupee will be stabilizing at a certain level. और अब रुक करते हैं वैश्विक शेयर बाजारों का। सबसे पहले एशियाई बाजार, जापान की निकेई को छोड़कर आज एशियाई बाजारों में गिरावट रही। जापान की निकेई में 0.6% की बढ़त दर्ज हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.3%, हांगकांग का हैंगसेंग 0.2% फिसल गए। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.1% के मामूली नुकसान में रहा। यूरोपीय शेयर बाजार अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान नुकसान में चल रहे थे। लंदन का FTSE 100 और जर्मनी का डेक्स दोनों 0.6% टूट गए। फ्रांस का कैक 0.7% की गिरावट में रहा। Moving on to the U.S. markets, the U.S. stocks closed modestly lower yesterday after investors digested hotter than expected U.S. inflation data. Inflation data higher than expectations fueled fears that the Federal Reserve could raise key interest rates by as much as 100 basis points later this month. The Dow Jones Industrial Average Index fell 0.7%, the S&P 500 declined 0.5%, and the Nasdaq Composite slipped 0.2%. Dr. Sharma, like we were just discussing, the U.S. Fed is going to hike the interest rates. But now, earlier it was like probably 75 basis points, but now it seems to be, analysts are speaking about 100 basis points increase. How do you think that is a likely possibility? Yes, likely possibility is that they will increase 100 basis points because inflation is not under control. Pressures are very, very high. So they were anticipating that the inflation will subside in the coming months, but inflation is not subsiding. Inflation is going up and up. So possibilities there that they will be more and more aggressive to control the inflation. Moving on to commodities, global crude oil prices today fell as investors weighed tight supplies against the prospect of a large U.S. rate hike that could stem inflation and curb crude demand. Crude prices declined around 2.5% in intraday trade. Brent crude was trading at $97.10 per barrel, while WTI crude prices were at $93.40 per barrel. और बात सोने की कीमतों की करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 400 रुपए सस्ता होकर 50,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 940 रुपए टूटकर 56,190 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में सोना मंदी के साथ $1,711.20 प्रति औंस पर था। डॉक्टर शर्मा, सुनते यही आए कि जब महंगाई बढ़ती है तो सोना जो है उसकी कीमतें बढ़ती हैं जी। तो अभी जो सोना हम देख रहे हैं 50,000 51,000 के दायरे में ही कारोबार करता दिख रहा है, ये ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। अगर यूएस में इन्फ्लेशन नहीं होती ज्यादा तो गोल्ड में बहुत एप्रिसिएशन आनी थी। जैसे ही डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड के ऊपर प्रेशर आता है, तो वही कारण है। और डॉलर ज्यादा देर तक स्ट्रांग नहीं रहेगा, ये भी बात तय है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज होंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा तो डॉलर वापस डिसेलरेट करेगा। तो उस टाइम पे कमोडिटी प्राइसेस में एक मेजर जंप आना कांट बी रूल्ड आउट। Majorly the gold prices and the silver prices. And a very quick comment, we have very little time left. Global crude oil prices we're seeing are on a decline for the last couple of days. And obviously that's going to have a good, positive impact on the prices also and here in India. Yes, that is majorly because of the strength of the dollar and anticipated reduction in the demand scenario world over. जी, डॉक्टर एसवी शर्मा, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी बहुमूल्य जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया, थैंक यू। And before we close, a reminder of the headlines. Exports in June to be around $65 billion. Wholesale price inflation eases to 15.18% in June this year. Sensex closes near 53,400 points. Nifty ends below the 15,950 level. Rupee weakens to 79 rupees and 88 paisa against the US dollar, and Brent crude prices plunged to trade around $97 per barrel. And with that, we end this program. Namaskar. Namaskar.